जेई एडवांस 2023 पेपर 1 का क्वेश्चन है हमारे सामने कि लेट क्यू बी द क्यूब with set of vertices x1 x2 x3 and these x1 x2 x3 belongs to what 0 and 1. Okay, let f be the set of 12 lines which contain diagonal of the 6 faces. यानी कि f is what, f we have that is set of face diagonals. Okay, and next one we have S be the set of all 4 lines which contain main diagonal of the cube. यानी कि S is what, set of main diagonals. Okay, main diagonal means they are talking about body diagonals. Okay, now we have the line passing through the points, the line passing through the point 0, 0, 0 and 1, 1, 1 is in set S. Okay, for the line L1 and L2, L1, L2 denotes what? Shortest distance between them. Then the maximum value of that distance is what? Okay, the maximum value of that distance is, we have to find where L1 varies over F and L2 varies over S. Okay, if we are giving these names, so A point we have B, C, D, E, F, G and H. Okay, given that key x1 x2 and x3 belongs to what 0 and 1, that means what, unit dimension cube we have. Okay, so it is given here, unit dimension cube. Now body diagonal and face diagonal we have to choose. So if we are going with body diagonal, so we can choose this body diagonal AH. Okay, AH is our body diagonal. And now one face diagonal we will choose. देखो, you have to choose a face diagonal which not passes through A and H. So that we can choose BD as a face diagonal. Okay, BD is our face diagonal. Why I am writing this one कि we have to choose only BD या फिर opposite to that, because if a face diagonal will which passes through these 2 points, suppose कि ये DH we have, if DH will pass, तो यहाँ पे देखो ये दोनों intersect करेंगे इस तरह से, इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, 0. बट हमें तो यहाँ पे चाहिए क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट डिस्टेंस. सो दैट्स व्हाई दीज लाइंस नीड्स टू बी व्हाट, इस्क्यू लाइंस. ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक AH वेक्टर को चूज कर लिया और एक BD वेक्टर को चूज कर लिया. BD इज अवर फेस डायगोनल. नाउ वी विल राइट इक्वेशन ऑफ AH एंड BD. ओके, सो इक्वेशन ऑफ AH लाइन. ओके, देखो AH लाइन विल passes through 0, 0, 0 and 1, 1, 1. तो इक्वेशन में इजीली लिख सकता हूँ, दैट इज x माइनस, इन द वेक्टर फॉर्म विल राइट, तो r वेक्टर इज इक्वल टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डिफरेंस ऑफ बोथ, यानी कि i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. ओके, एंड इक्वेशन ऑफ BD, तो BD देखो पास कहाँ से हो रही है, BD इफ यू विल चेक दैट पासेस थ्रू 1, 0, 0 एंड 0, 1, 0. ओके, सो R वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप प्लस म्यू टाइम्स डिफरेंस ऑफ बोथ, तो माइनस ऑफ I कैप प्लस J कैप. तो यहाँ पे जो फॉर्मेट मिलता है वो स्ट्रेट लाइन का क्या मिलता है, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स P वेक्टर, एंड अनदर वन वी आर सेइंग R वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स Q वेक्टर. और these are what, these are skew lines. So if we have to find distance between these two lines, so skew line का distance क्या होता है, D is equal to B वेक्टर माइनस A वेक्टर dot with P vector cross Q vector upon magnitude of P vector cross Q vector. So our first target is what, B vector minus A vector we will find.
तो सेपरेटली यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. तो बी वेक्टर वी हैव आई कैप ओनली and a vector is what? 0. So we'll get I cap. Now P cross Q. So I cap, J cap, K cap. Okay. Then P vector. P vector is what? 1, 1, 1. And J vector we have minus 1, 1 and 0. If we will open with row 1, so I cap we will get 0 minus 1 minus of J cap 0 plus 1 and plus of K cap we have, that is 1 plus 1. So we are getting minus of I cap minus J cap plus 2 K cap. Okay. And magnitude of this vector is what? P vector cross Q vector magnitude we are getting root over 6. Okay. Now we will substitute these values in this distance d. So we'll get I cap dot with minus of I cap minus J cap plus 2 K cap upon magnitude of P cross Q, that is root 6. So we are getting minus of 1 by root 6. So distance cannot be negative. So we will use what? Mode. Okay. So 1 by root 6 is our answer. Okay. 1 by root 6 means option number A is our correct answer.